In my previous lecture, I told you how to make a truth table, and I also given you some question. You have given me answer. That is very good, and I have solved also in previous lecture some complicated questions. Okay, today we will solve the complicated question of gates. I hope you purchase your book, students. I told you again and again, please purchase your book. This is the only way we and you can make this thing possible. Without book, it's not exactly possible way. Okay. So example number 3.8, I am going to discuss. Still you don't have a book, so I need to write the question first. ABC equals to AB plus AC bar plus B bar, A bar and C. This combination you need to make a gate, my dear students. Let's start to make a gate. It's very simple. A and B, A and C bar plus B bar, A bar and C. A and B, my dear students. A and B. Can you tell me what is the gate between of them, A into B? It is AND gate or OR gate? Obviously it is a AND gate, my dear students. Next is AC bar. So again if the any input is used, okay, देखो A यहाँ भी यूज हुआ है और A यहाँ भी यूज हो रहा है. If again we use the input, then no need to write it again. We have to take a wire from it. देखो हमने A से वायर लिया and what we make, C is a new one, so C को बनाया and I told you inverter is there in the negative sign, so make the inverter. And what is the combination between both two? The combination between AND B. Can you understand students? ये एक ही लाइन हम यहीं से लेके आएंगे, इसको अलग नहीं बनाएंगे क्योंकि A ऑलरेडी यूज हो चुका है. ये बताता है कि ये ऑलरेडी यूज कंपाउंड है. ठीक है. नेक्स्ट इज B बार, A बार एंड C. नाउ स्टूडेंट हमारे पास B तो है, लेकिन हमारे पास पहले क्या था, B बार था और सॉरी पहले B था, अब क्या आ गया, B बार आ गया. तो हम क्या करेंगे, B से ऐसे लिया और इन्वर्टर लगाया, A से लिया और इन्वर्टर लगाया एंड देन बीच में कॉम्बिनेशन क्या है, C से भी लिया है. तो C एक्चुअली C नेगेटिव है, तो इसके पॉजिटिव वाले पोर्शन से हम लेंगे यहाँ से और C पे लगाएंगे और दोनों के बीच कौन सा गेट है, तीनों के बीच AND गेट है और इसको साइमल्टेनियसली कौन सा गेट बना देंगे हम, तीनों मिलकर क्या कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इन तीनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का. तो प्लस कौन सा गेट होता है, OR गेट. Can you see how we will solve the question? Again I am repeating, this needs to concentrate students. This is AB and this AC bar plus B bar, A bar, C. My dear students, we will give first two input A and B over here. So I started with the first two input A and B and make a one proper AND gate for them. Next my dear students, AC bar is there. So A से I will start and C में I will put the inverter because C is a negative constant over here. So I will put the inverter and A से positive लेके I will make one AND gate. Next my dear students, B bar, A bar, C. So B में we start from the positive. It is a positive compound and change to the negative. तो B से लेकर के I put the negative B वाली लाइन में and then A वाली लाइन में again A was positive earlier. So again we put negative and then C वाली line and then proper make AND gate because the combination of these three is AND gate. Now combination of the final report is OR gate. As you can see, this is a plus sign over there. That means इसका output is generated one final output, that is combination of OR gate. It is very simple students, but it needs practice more and more. Okay. Now students, can we go on to the next? We have a next is my dear students, x plus y, x plus z bar
दिया, दोनों के बीच में एक और गेट लगा दिया, दैट x प्लस जेड बार और गेट है तो x निगेटिव है, तो यहाँ से तो पॉजिटिव लेके आएंगे लेकिन यहाँ पे इन्वर्टर लगा देंगे क्योंकि निगेटिव है। ओके, अब z एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है और z पे बार है तो इन्वर्टर लगेगा और x इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है, अगेन एक और गेट। Can you see it's easy? Now next y plus z, अभी हमारे पास y पॉजिटिव है, यहाँ से लेके आएंगे y अपना, z निगेटिव है तो यहाँ से निकालेंगे, निगेटिव होता है तो यहाँ से नहीं निकालते, यहाँ से निकालते हैं। ओके, यहाँ से स्टेट पॉजिटिव है और ये कौन सा गेट है, दैट इज एंड गेट, इसका भी एंड गेट एक बन गया स्टूडेंट्स। अब क्या बनना है, इनके बीच में कौन सा कॉम्बिनेशन है फाइनल आउटपुट के लिए, फाइनल आउटपुट के लिए वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट। Can you see? It's very easy students, it needs practice only but it's very easy it is. Okay, I hope you understood my students. Now we were discussing some law in my previous lecture. Now we will start with again law, complementary law. What is the meaning of complementary law? Complementary law means x plus x bar equals to 1. That means x plus x bar equals to 1. X means 1 plus x bar means 0 and equals to 1 means 1 plus 0 equals to 1. Okay, so this is the meaning of complementary law. Next is commutative law. Commutative law कहता है हमारे स्टूडेंट कि अगर x plus y है तो आप इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्या है y plus x plus y है तो इसका जस्ट अपोजिट करो एंड व्हाट यू हैव टू राइट y plus x. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में we multiply the content equally. The content is students x y plus z and that is equals to x का multiply पहले y में होगा, then it will give xy, this x का z पे होगा. As it is just we are solving the mathematical expression, we are solving the same as it is students. And our last law is absorption law. X plus xy equals to x. Is it possible? Why I told you this law? Because some of the questions you will get by this formula to solve. कि अगर कहीं x plus xy लिखा है तो आप उसकी जगह x भी लिख सकते हो और फिर लिखोगे आप ड्यू टू absorption law. ठीक है, तो now come to the De Morgan theorem. It is very important. I told you principle of duality and De Morgan theorem. So both are important one by one. This laws always asked by the board examination. What is the De Morgan theorem? The De Morgan theorem says, my dear students, x into y bar होल पे बार है तो ये इक्वल्स टू के बाद सेपरेट बार में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो एंड गेट है वो और गेट में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज द ओनली थ्योरम फॉर द De Morgan. Into change to the plus and then combination of bars change to the separate bar. So in this way we completed the chapter today. In my next lecture I will solve some question answer which is important for your board purpose. Still most of the students is not submitting the homework properly. If you have joined the group then do the homework. If you don't want to continue, still have a confusion that I will take CS or physical, please remove yourself from computer science. Okay, please leave that group so that I came to know how many final students I have in CS. Thank you so much.